What is up? How you doing? कैसे हैं आप on this awesome Tuesday evening? We are going to continue talking about electrochemistry. Oh yeah, look at that, we're matching again. Can you hear me? मेरी आवाज साफ आ रही है? You're able to see me, right? आज क्या बात करने वाले हैं? Specifically, we'll talk about Faraday's laws and the products of electrolysis. ये topics are there in your NCRT. So let's look at that quickly before we start. All right. Hi Mehak. Hi Hero. Rajanya. Pranam. Rajanya, how did your WBJE go? How was that? And Nest किसी ने लिखा who's in the chat? I want to actually solve Nest. Nest seemed like a fun paper. कुछ students बोल रहे थे कि physics में तो Nest was even harder than JEE Advanced. But yeah, तो आपके लिए कैसा था? WBJE, how was that? Want to quickly look at yeah, कहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. मैंने ब्रॉडली आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती क्या है लास्ट सेशन के एंड में, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिवली फाइंडिंग आउट कि वेल कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन. मतलब आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस जबरदस्ती बना रहे हैं, राइट? एंड आयंस आर कमिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन, रिडक्शन हो रहा है तो जाहिर है कैथोड पे होगा, है ना? कीप दैट इन माइंड, कीप ऑल दीस बेसिक थिंग्स इन माइंड, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. Then we'll use some awesome stuff to get to the mass of the actual metals deposit. Okay, first law, second law. I think second law is very similar to the first law. I mean, I've never looked at it as two separate laws, to be honest. Like while solving questions, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा. You can think of it just as one law. बहुत openly बोल रहा हूँ, but we'll teach you both the laws in all their forms. ठीक है. And we'll see कि अगर हम लोग कुछ conditions बदलें, देखो हमने देखा था NaCl molten when you electrolyze that, what happens, right? Then you get sodium and chlorine. Now, अगर NaCl पानी में डालो तो कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे. Similarly, when water is in the mix, you will get different kind of products. And this is what we're going to cover today. Whoa, hold on, this guy is falling off. मत. Okay, all right. All right, Rajanya. All right, Sumit. Why am I taking your name, bro? पढ़ाई करना है, टाइम पास करना है, पढ़ाई करना यहाँ पे हो, इस जाओ जाना है. I'm only partially kidding. Yeah. Say moderate. Walter White, bro. All right. Cool. Batteries वाला पार्ट तुम लोग कर लेना. Cold Rush law we'll do next time. All right. So what's the focus of today? Electrolysis. Well, specifically Faraday's laws. So let's get right to it. एक second. Where did we go? कहाँ गए हम? ये कहाँ? All right. So the topic on NCERT's factors affecting electrolysis. The first thing you're going to look at is okay. Well, depending on कितना current आप pass कर रहे हो, कितना potential difference है, हाँ. Hey, what matters actually? Think about it. अगर मैं एक यूजुअल सेटअप है और मैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कर रहा हूं, व्हाट डिसाइड्स कि कितना क्वांटिटी ऑफ स्टफ गेट्स डिपॉजिटेड? इज इट द वोल्टेज और इज इट द करंट? वोल्टेज तो फिक्स है, ठीक है. अगर मैंने सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी लिया, उन दोनों को मैंने डाला अपने सेल में, देन आई कांट चेंज द वोल्टेज एज सच. आई कैन कीप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल करंट. उससे मतलब जो बाहर का सर्किट है बैटरी, आई कैन यूज वन बैटरी और आई कैन यूज मल्टीपल बैटरीज. बहुत ढेर सारी बैटरीज, उससे क्या फर्क होगा? ज्यादा वोल्टेज से क्या होगा? थिंक अबाउट इट, सोच के देखो थोड़ा फिजिक्स से. बट व्हाट विल हैपन इज a larger voltage outside will basically just lead to a larger current, and a larger current or larger charge passed, that is going to decide the quantity of stuff being deposited. Quantity, let's say metal, we can say metal deposited or gas evolved, दोनों चीजें. यहाँ पे हम लोग गैस लॉस थोड़ा बहुत यूज करेंगे ऑब्वियसली, राइट? विल यूज दैट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे मैटर करता है, वील टॉक अबाउट दैट लेटर. कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट तो यू नो ऑलरेडी, राइट? नॉन्स लॉ का एप्लीकेशन है. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ओह दैट दिस वन इज न्यू. ठीक है, देखते हैं. पहले लेट्स लुक एट द इजीएस्ट वन व्हिच इज फैराडेज लॉज इटसेल्फ. ठीक है, कि कितना चार्ज हम लोग पास कर रहे हैं. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड व्हेन आई सेड कि अगर आप एक बैटरी लो और इफ यू टेक मेनी बैटरीज, क्या फर्क पड़ता है? ये चीज आपको समझ में आई? देखिए, फॉर अ बैटरी, राइट, एवरीथिंग इज ईदर अ रेजिस्टर और अ इंडक्टर और ए तीसरी चीज कैपेसिटर. ठीक है, हमारे लेवल पे केमिस्ट्री में वी विल ट्रीट एवरीथिंग एज अ रेजिस्टर. वी आर नॉट वरीड अबाउट कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स सो मच, राइट? फिजिक्स में आप वो सब पढ़ोगे, आरएलसी एंड ऑल दैट. सो अ सेल, कहां गया सेल? चलो यहां गया सेल. ठीक है, लेट्स से दिस इज माय सेल, दिस इज माय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, you got two things going on, etc, etc. For a battery, what is this? This is the same as just a resistor. ठीक है, वो रेजिस्टर कांस्टेंट है मोर और लेस. ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, कम होता है. अगर मैं बैटरी ज्यादा बड़ी करूंगा, इफ आई पुट गिव मोर वोल्टेज, व्हाट हैपेंस? मोर करंट विल फ्लो. मोर करंट फ्लो मतलब मोर चार्ज विल फ्लो. इज दैट राइट? सोचो इसके बारे में. देखो,
फिजिक्स के आइडियाज लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आइडियाज यू विल हैव टू पुट हियर, द बेसिक्स मैन, बेसिक्स फ्रॉम 10th grade. Think about that after this session. Okay. Okay, let's get back to what is directly इफेक्ट क्या है। ये मैं कॉज की बात कर रहा था, बैटरी की वजह से चार्ज फ्लो होगा ना, तो हम लोग अब सीधे चार्ज की बात करते हैं। अब कहीं से आया चार्ज आया, ठीक है, somehow we have got charge. Now the more charge you pass, the more mass of stuff gets deposited or the more mass of gas is evolved. Okay, and कितना exact होता है, that is what Faraday's laws tell you. They will tell you the exact amount of product of electrolysis for some stuff that's deposited. ठीक है, फर्स्ट लॉ फैराडे का बोलता है कि ठीक है, अगर मैं सिल्वर लूं या फिर मैं गोल्ड लूं या फिर से हाइड्रोजन, whatever it is, any substance I take, if I pass a fixed amount of electricity for a fixed amount of time, electricity time क्या होता है, I into T is charge. If I do a fixed amount of this, then the mass that I get is always going to be the same, irrespective of कहां से मैं सिल्वर लूं, गोल्ड लूं, कहीं से, इट डजंट मैटर. एंड दिस साउंड वेरी सिमिलर टू द मोल कॉन्सेप्ट, है ना, कि मैं पानी यहां से लूं या वहां से लूं या यहां से लूं, पानी का हमेशा फॉर्मूला H2O ही होता रहता है, राइट. सो मे बी दिस हैज समथिंग टू डू विद दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ, राइट. यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट दिस. अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेक द सब्सटेंस इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स, and you know that the number of moles of a substance that a substance interacts with, उसी को हम लोग तो क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं, राइट. यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स, प्लीज लेट मी नो चैट इफ दिस मेक सेंस और दिस डज नॉट मेक सेंस. यहां आया रिडॉक्स रिएक्शन का आइडिया, ठीक है, वी विल यूज दैट राइट अवे. लेट्स पुट दैट इन सम वर्ड्स ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो. यू कैन आल्सो रिकॉल, यूज दीस नोट्स टू रिकॉल स्टफ. ओके, सो द मास डिपॉजिटेड और रिलीज्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड. मैंने वही तो बोला, अगर मैं फिक्स चार्ज करूं तो सेम होगा, तो अगर चार्ज बदलूंगा तो फिर मास बदल जाएगा. ओके, सो m is proportional to say q, right, we can say that m हो गया मास. अगर m नहीं, कुछ जगह आप लोग वेट लिख सकते हो. हम लोग केमिस्ट्री में we use it interchangeably, weight और mass, but you know हम लोग are talking about the mass, let's say in gram. I know SI यूनिट क्या है उसकी, किलोग्राम है. चलो अभी ग्राम की बात कर लेते हैं, ग्राम किलोग्राम आराम से we can convert, don't worry about that too much. All right Amit, how's it going? So the proportionality constant is called Z, which is the electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन दोनों चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. इफ यू लुक एट एनसीईआरटी, दैट्स व्हाट इट से. इन फैक्ट एन असर्शन रीजन केम इन जेईई मेन कि इट इज द इलेक्ट्रिकल समथिंग, इट इज द केमिकल समथिंग इक्विवेलेंट एंड द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, कुछ सवाल था. इट वाज लाइक वियर्ड क्वेश्चन. The questions in JEE main and in NEET have been a little bit strange of late. एनसीईआरटी की एक एक लाइन को छानबीन करके वो लोग आपको दे रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर रीड द एनसीईआरटी. बार बार बोलता हूं, बाकी 1000 बुक्स आप पढ़े ना पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? रिमेंबर आई सेड देयर आर टू आइडियाज, वन इज सम इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया, द अदर इज द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस. ओके, ठीक है, कूल. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया? इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया ये है कि चार्ज मतलब यूनिट क्या हो गया इसका, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम. नाउ यू ऑलरेडी नो दिस, right? When you do E equal to E naught minus RT by NF ln Q, F basically accounts for what? F accounts for 1 mole of charge. ये रिकॉल कर रहा हूं मैं, थोड़ा आपको रिकॉल करवा रहा हूं. Which is how much? 96,500 coulomb. ठीक है, cool. Nothing new so far. Hey Himanshu, long time. Good evening. How you doing? सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वल क्या होता है, एक मैंने आपको आइडिया बताया. दूसरा आइडिया क्या होगा, दूसरा केमिकल वाला आइडिया होगा. ओके, सो इफ आई टेक द चार्ज टू बी 1 कूलम, देन द मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वल. इसका मतलब है, देखो, आई एम सेइंग दैट मास इज z टाइम्स q. नाउ इफ आई टेक q as 1, देन w विल बी इक्वल टू z. दैट्स ऑल वी आर सेइंग हियर. अच्छा, और ये इसका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, कितना होगा अगर 1 कूलम चार्ज है, कितना होगा? बहुत कम, बहुत ही कम. सोचो, I think for gold or for silver, it is something like 0.00118 gram. ऐसा something like that. Where's my calculator? I'm going to do some magic, and you will be able to do this magic as well very soon. I'll tell you the exact amount. 1.11. Sorry. हाँ, बिल्कुल सही है. तो 8 नहीं है, 9 है बस. 0.119 gram. That is the mass. Okay. This is the mass basically. That's deposited when you take 1 coulomb. Now, AU नहीं, सॉरी, ये सिल्वर का है. मैंने बोला सिल्वर, लिख दिया गोल्ड. अब हाउ डू आई नो दिस? मैंने मनगढ़ंत कैसे नंबर निकाला?
Now that is where that 96,500 comes into the picture. Keep that in mind, okay? इसका हम लोग यूनिट लिख सकते हैं एज ग्राम पर कूलम और किलोग्राम पर कूलम. तो दिस, इसको मैं फिर से ध्यान से लिख देता हूं. इट इज 0.00119 किलोग्राम पर कूलम और 1.192 ग्राम पर कूलम. ठीक है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो बाय द एंड ऑफ सेशन, और इवन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स यू विल डू दिस योरसेल्फ. ठीक है. So the mass deposited liberated when 1 coulomb of charge is passed into solution is this, right? This is just like saying V is equal to IR. तो resistance क्या होगा? If I pass current of 1 ampere, the resistance is going to be equal to the voltage. That's what you say. No, is that right? Or yeah, sure, absolutely. ठीक है, cool. This is the same as saying that. This is a mathematical equation. कोई नई चीज नहीं है. All right. तो आपको क्या लगता है? Because हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं. And what is the overall underlying reaction? Like say if I take a metal, it may not be a metal, but it could be anything, could also be H plus, right? And I give it n electrons and it gives me m, right? This is the underlying equation maybe for reduction. ठीक है, मतलब यहाँ पे electrons transfer हो रहे हैं. So does it have something to do with this equivalent mass thing? Equivalent mass था क्या? What is equivalent mass? It is a mass, writing it again, that reacts or interacts or whatever with 1 mole of electrons. बट हमारे पास 1 मोल तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. अभी मैंने बोला कि मेरे पास 1 कूलम चार्ज है. व्हाट इज 1 कूलम चार्ज? उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज? नाउ इट लुक्स लाइक अ फिजिक्स लेसन, राइट? यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ दीस थिंग्स. ये इंटर कन्वर्ट एक चीज है दूसरा करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है इसको आराम से कर पाओगे. 1 कूलम चार्ज, हाउ डू वी रिलेट दिस टू दिस थिंग? अच्छा, यू रिमेंबर 96,500 कूलम वाज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 by 196,500. That's it. So Z has to have this factor in it. Okay, cool. But then Z will be a constant? No, Z depends on the material. Since Z depends on the material, we also have to factor in the mass of the material being deposited. But यहाँ पे तो mass की unit है ही नहीं. Mass की unit कहाँ से आएगी? Right now, what is the unit we have? We have 97,500 coulomb per mole of electron. और यहाँ पे हमारे 1 कूलम है ऑफ नथिंग, तो ठीक है, कूलम विल कैंसिल, बट यू स्टिल हैव मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट डू यू डू विद मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? पुट इन द इक्विवेलेंट वेट ओवर हियर. अगर मैं इक्विवेलेंट वेट न्यूमरेटर में डाल दूंगा, व्हाट इज दैट? दैट इज द मास पर इक्विवेलेंट, व्हिच इज बेसिकली पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल कैंसिल हो गया, खत्म. सो Z is basically defined as the equivalent mass divided by the Faraday's constant into the n factor, because n factor is number of electrons, man, you got to account for that. Okay, we'll say one more time, don't worry, सब कुछ लिख के आएगा, मैं आपको बस idea रहता how this works. So what is the equivalent mass? The mass of any substance when you take 1 mole of electrons and pass through a solution during electrolysis. I've already told you this, बहुत बार ये चीज हम लोग कर चुके हैं, redox reaction में भी, but we'll write it here once again. Any doubts in this concept? Are you guys good here? सब कुछ ठीक है यहाँ पे? Yeah, just give me a thumbs up if this is fine, right? Is this okay or is this confusing already? Please let me know. Till now we haven't done anything new. मैंने बस आपको एक इक्वेशन बताई थी और मैं आपको उसी इक्वेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि हाउ डज दिस वर्क, ये क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है. या बाय द वे, यू एबल टू सी मी एंड हियर मी क्लियरली, राइट? देयर इज नो व्हाट यू कॉल इट, क्या बोलते हैं, लैग, नथिंग, नन ऑफ दैट स्टफ. ऑलराइट, ग्रेट, कूल. वियर्डली मुझे इसका जो है आउटपुट थोड़ा सा अजीब लग रहा है. नो, लिटिल लैगी फॉर सम रीजन. नो, या, इट्स वियर्ड. Give me a second. Huh. Okay. We're good. When I move my hands. Okay. Ruko. Let me just play this on my phone. I think we're good. Okay. Cool. We're going to continue. Whoa. Sorry. Khushbu ji is calling. Who's doing a JEE main session, I think. I'm just going to take this. Just 1 second. Give me 1 second. How do I pause my audio? सॉरी, माफ कीजिएगा. ठीक है. Alright, you can hear me, see me clearly, right? I just have a different setup, but I haven't changed this. So I'm weirded out by why this is a little jarry. Like मुझे लग रहा है कि इसका frame rate थोड़ा सा अजीब है. But everything seems to be good here.
Maybe it's just something that मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, but there's nothing that's really off. But खैर. Okay, cool. Let's continue. Let's continue talking about what we were talking about. Whew. Yeah. So equivalent mass क्या है? You know this, right? The molar mass divided by number of moles of electrons. Okay, where were we at n factor? So silver, silver, the example that I was telling you, इसका equivalent mass is simply the molar mass by 1. What about copper? It's going to be molar mass by 2. This is straightforward. Okay. What about aluminium? Molar mass by 3. Right? This is straightforward. इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Now, again, जो मैंने पहले लिखा था, 1 mole of electron is 1 farad of charge, which is 1 farad is 96,500 coulomb. So, use this and use it there. So, if I have 96,500 coulomb of charge, तब एक equivalent deposit होगा. ठीक है? This is the most important part of this entire Faraday's laws. बाकी जो सवाल यार आप अपनी नींद में कर लोगे. Please let me know if this is okay. 96,500 coulomb मतलब कि E मतलब equivalent mass of gram gets equivalent gram of the metal gets deposited. Now you will be like, how did I calculate that Z value of silver? मैंने कैसे calculate किया? ऐसे ही तो किया. You know what I did in my calculator? I literally put 108 gram, which is the equivalent mass of silver because का molar mass by 1, right? Divided by 96,500. If you do this, oh, मैंने units वहां पे गलत दे दी थी. You get 0.0119 gram per coulomb. Yeah, this is coulomb per equivalent. So you cut these out. That's it. Rajan, yeah, sure, we'll do aluminum example. Aluminum क्या example करेंगे? कर देते हैं उसमें क्या है? But if you're wondering कि मैंने ये number मैं कहाँ से लेके आया था, let me just correct the unit in the last one. हाँ, units थोड़ा मैंने आगे पीछे कर दिया था. Let me just fix the units there. Where did I write that? Was it here और भी पीछे? कहाँ लिखा था? यहाँ लिखा था क्या? नहीं, और पीछे. Gram. So देखो, if you a tough question, maybe a tough question in this topic, I'll get to you, Rajanya. मैं भी बताता हूँ. Just give me a second. A tough question in this could say that instead of gram per equivalent, they give you the Z value as 1.192 into 10 power minus 6 kilogram per coulomb. If they give you the Z value, don't get scared. You're like, अरे ये क्या है? How do we get this? यही तो same चीज है. देखो, what I got right now was this is 1.192 into 10 power minus 3 gram per coulomb, right? किलोग्राम में करोगे तो और 10,000 से डिवाइड हो जाएगा. That's it. How did I get this in the first place? I divided the molar mass by 96,500. Now, what did Rajanya wanted? Rajanya wanted कि aluminium का फिर से बताएं. Aluminium में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. So what is the Z value of aluminium? It's going to be the molar mass of aluminium, which is 27 gram per mole. But I need the equivalent mass, right? Not the molar mass. What is Z actually? Z is equivalent mass divided by Faraday's constant. But I have molar mass, ठीक है. And how do I get, what is the relationship between molar mass and equivalent mass? This is simple stuff, but we'll revise this again once more. Don't worry. Molar mass, equivalent mass. What is the relationship? Divide by n factor. ठीक है? इस तरफ. How do I know किस तरफ होगा, इस तरफ है, उस तरफ? देखो, equivalent mass has to be smaller than molar mass. Why? Smaller than or equal to? क्यों? Equivalent mass is a mass that reacts with 1 mole of electrons. अगर वो भाई साहब unipositive ion है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, then its molar mass is equivalent to equivalent mass. If it accepts 2 moles of electron, then हो गया उसका mass आधा, which means equivalent mass has to be smaller than molar mass. That's how I write this equation. That's how I keep, मैं इसको याद रखता हूँ. ठीक है. Divide by 3 equivalents, right? Or what is this? 3 equivalents per mole. Okay, sweet. This gets cancelled, so you get gram per equivalent. 9 gram per equivalent. I could write this as 9 gram per equivalent divided by 96,500 charge, which is coulomb per equivalent. Divide both of these, and this will be the value of Z in gram per coulomb. How much is this? Do you want to do this? Very easy. I know ना, बहुत simple है. Creativity साहब, exactly. सोमनाथ, जरूरत है, absolute जरूरत है. Rajana, can you tell me this value? Mehak, Raghav bhai, can you tell me what is this value? कर दो, 2 मिनट लगता है. What is 9 by 96,500? If I approximate it, let's take it as 10. No, you don't have to actually. This is basically 1 by approximately 10 power 1, 2, 3, 4, 5. Approximately 10 power 5. Yeah, thank you, Mehak. Lovely. I'm also going to put in that in the calculator just to make sure
that the units are correct. Let's say 9.3 in 10 power minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent work. Mehak, thank you. 9.32 into 10 power minus 5. यूनिट क्या हो गई? ग्राम्स पर कूलम. मैं तो सोचा नहीं था हम लोग इतना डिटेल में जेड की बात करेंगे, बट बढ़िया है, अच्छा है. यहां पे कर लिया तो आपको बाहर कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑसम. ठीक है. दिस इज Faraday's first law. Okay. So one coulomb of charge flows when you have this amount of mass of metal deposited, and this is Z itself. वही मैंने अभी आपको बताया, डिटेल में बताया. Z is E by 96,500. Okay. So Z is the mass deposited or liberated when one coulomb of charge passes through solution. Okay. So then I can say, remember, W is ZQ, or I can also write this as mass. This is the form of the equation I like writing the most. M equal to Z I T. Charge क्या होता है? Charge is पानी बहुत दूर चला गया. What is Z? Sorry, M is Z into I into T, because charge क्या होता है? Current पास किया थोड़े टाइम के लिए, बन गया चार्ज. ठीक है. Alright, thanks Rajan. Absolutely right. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Okay. So this is what I can write the whole Faraday's first law as. So in conclusion, जैसे बोलते हैं, मास क्या होता है? मोला मास divided by n factor into I into T divided by 96,500. This is Faraday's first law. All right, अब कर किया जाए numerical. Find the number of electrons involved in the electrodeposition of 63.5 gram of copper from a solution of copper sulfate. So this is the overall reaction. Copper sulfate accepts 2 electrons, gives me copper and other products, which we will not worry about right now. So this is the underlying equation. Okay? Can you now use this one equation and give me this idea? कितने electrons हैं? This is a little bit different, huh? Number of electrons. How do we get number of electrons from here? सोचा है क्या? देखो, if I get mass, तो 63.5 ग्राम को चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. इसका आप मास निकालो, जो भी मास निकल रहा है. ठीक है. एंड देन यू से कि फ्रॉम हियर आई थिंक वी कैन डू दिस. आई नो दिस दैट 63.5 ग्राम रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओ, मैंने आंसर दे दिया. अरे यार, मैंने आंसर दे दिया. खैर, ट्राई इट आउट. गिव मी द नंबर while trying to help you solve the question. I gave you the answer. Did you catch that? If you didn't, that's great. If you did, और भी अच्छी बात है. बताइए, how do you think we can make this work? How do you think we can make this work? Is this question difficult from what I've told you? क्या ये सवाल मुश्किल लगता है, doable लग रहा है? Give me an honest opinion. It's fine. अगर मुश्किल लग रहा है, that's also fine. अगर आसान लग रहा है, that's also fine. It is a little laggy. Like it's really laggy. I don't know what's the scene with this camera scene. Give me a second. I'm going to fix that. It's bugging me. It feels like there are some frames being dropped, but there are no frames being dropped. Hold on. I'm just going to turn my video off for a second and fix this. Hopefully, that fixes things. Ruko. Under construction. Okay. Is that better? Hold on. I'm still trying to figure out. चक्कर क्या है भाई? Okay. Oh, that is so much better. Yes, Z is M by 2. All right, Rajanya. Thank you. Yeah, the camera was glitching out. So when I was waving my hand, never mind. It's just some technical stuff that just bugs me a bit. ठीक है. 63.5 gram. Yash, answer तो बताओ. Rajanya says Z is M by 2. Okay. If Z is M by 2, how does that help? It's not M by 2. Rajanya, you gotta write one more thing. It's N by 2 into F, right? F डालना पड़ेगा, right? You cannot skip the electrochemical equal. You cannot skip Faraday there. You see, if you do M by 2, you will get 63.2 by 1, which is 31 point. That's too big a number. इसलिए मैं तुमको आइडिया दिया कि कितना छोटा नंबर होता है. It is very very small, right? Point something gram per coulomb. So get an idea that if you're forgetting 96.500, please डाल दो उसको.
Okay, how do we solve this question? I already gave you the answer, but ठीक है. इसमें 63.5 ग्राम is 2 equivalent. What is 2 equivalent? मतलब कि 2 mole of electron. 2 mole electron कितना होता है? 6.0221 into 2 into 2 10 power 23, which is 12 into 10 power 23, which is the answer right here. ठीक है? ये वाला आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. Shouldn't take you too much time to do this, but because मैंने आपको exactly ये बताया नहीं कैसे करना है, maybe you found it to be a little tricky, but this is not that tricky. Yeah, this one, let's make the effort here. A current of 0.5 ampere when passed through Ag in a solution for this much time deposits this much mass of Ag. Find the equivalent mass of Ag. Okay, ठीक है. ये कैसे किया जाए? I write M equal to ZIT, and then I write this to be equivalent mass divided by क्या करूं? F into IT. Yeah, absolutely, absolutely. Thanks, Rajanya, for the value of Z there. All right, we don't need it, but thank you for giving me the value of Z. It's good. It's a very good practice. Randomly निकालते जाओ. जो सवाल में नहीं पूछा वो भी निकालते जाओ. For your curiosity, just so you get a feel for the numbers. It's important, okay? Because exam में अगर कुछ गड़बड़ी किया आपने, then you'll be like, you know, ये number feels off. That's also important, especially subjective papers में, right? I know you are used to objective papers, and you don't have to worry about those things. But in real life, that subjective stuff is really, really important. Okay, so using this, I think we have to figure this out. ये तो बहुत direct सवाल लग रहा है. Okay, so if I write M equal to ZIT or I write W equal to Z into Q, what's the next step उसके बाद? Z क्या होगा? Z is simply E by 96,500. Okay, cool. Remember, there is no more N factor here. Okay, I know silver का N factor एक ही होता है, but it doesn't matter. You don't have N factor if you're already writing E, right? That's already accounted for. है ना? Equivalent mass लिखने का ये मतलब हुआ ना कि something reacts with 1 mole of electrons. So please, my dear friends, when writing equivalent mass जबरदस्ती N factor मत डालो. Equivalent mass मतलब खत्म. ठीक है. Okay. What do we do here? So let's write. We know the mass to be 1.108. Z we don't know. We'll find out. Time कितना है? 193 into 0.5. The moment you see 193, you're supposed to pounce on it, because what is 193? This is 96.5 into 2. ठीक है. मतलब it's going to get cancelled out of 96,500. If you do enough questions, you'll see that right away. Okay. So this goes twice. This goes 100 times, right? ये 100 गुना जा रहा है. This goes twice. And would you look at that? 2 into 0.5 is 1 and 100 into 108. Yay! You know the answer to this one already. The equivalent mass of silver is, surprise, 108 gram per equivalent. Yeah, an easy question. Let's go on to the next one. If you have a doubt in this, please tell me. Yash, you said doubt, but I'm not sure if you meant a doubt in what I'm teaching to you right now or just a general doubt in life. If it's a general doubt in life, go to the chem sessions wala bento link. Yeah, join the Discord server. Ask as many doubts you like. There are awesome students who will help you right away. मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके दौरान भी पूछ सकते हो उनसे. ठीक है. While I'm talking about this, you can ask me things related to this. अगर किसी जनरल चीज की बात करनी है, वहां जाके प्लीज डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछ सकते हैं. If you want to download the app, you know where to find that as well. That link is also pinned in the comment right now. So what's the total charge required for the oxidation of 2 moles of Mn3O4 to MnO4 2 minus in alkaline medium? अरे वाह, redox के और आइडियाज आ गए. देखो, नॉर्मली क्या होता है कि you have MnO4 2 minus giving you Mn3O4. And Mn3O4 is weird. Is it a mixed oxide? Looks like it. I don't know. I know MnO2 exists. And yeah, I know MnO2. What is Mn3O4? Is it like Fe3O4? I don't know. It's weird, right? It's weird. We'll see. We'll see. ठीक है. But यहाँ पे हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, right? We are doing this, which means कि we are oxidizing it. Oxidation. Okay. ठीक है. हम लोग oxidize कर रहे हैं. Oxidize कर रहे हैं. That means that the oxidation number of this, which is plus 6, you can calculate this, right? You get a manganese plus 4 into minus 2 equal to minus 2, which means manganese equal to plus 6. Matlab, this oxidation number has to be lower than 6. That's the first thing. So when you're calculating things, pehle wo karo. Okay, cool. This is a recap of the redox reaction wala chapter. Is it lagging? That's weird. It's lagging for you. Matlab, what is lagging? Main samjha nahi. If it's lagging, please turn off ad blockers. That's important. Yeah. What I've seen is that if anybody uses ad blockers, Google Baba is not very nice to you, right? Especially off late, they are like, bro, yeah, any ad blockers you use, irrespective of the browser, or you use YouTube Revanced or whatever it is you're using, don't, right? It's not, YouTube's not, is not in your favor, and it's going to shut that down. They are trying to promote the sale of YouTube Premium, which means even in a live video, if you have an ad blocker on, it completely messes up your live video experience.
because of the way that they deal with ad blockers, the way YouTube deals with ad blockers. So yeah, I looked it up because students would tell me that their videos lag when I do live sessions, and I check my setup. Setup's absolutely fine. It's YouTube who's messing with you, and the reason they're doing that is because they want you to remove ads. They want you to watch ads. Yeah. Karthik, what's happening? Kaise ho tum? Khair, shall we solve this question, Rajanya? Let's do this one. Yeah. What's the total charge required for oxidation of 2 moles of Mn3O4? And why am I doing this? Because you will need all of this together to solve Faraday's first law. ठीक है, सब चीज साथ में चाहिए होगी. So let's go Mn3O4 to MnO4 2 minus. What's the first step? What's the first step? What would you do? I would like to find out the oxidation state of Mn here. What is the oxidation state here? And here to know, I know it is 6 plus. This is also doable. Let's take that there are no peroxy linkages. Let's take that oxygen is -2. If you do that, manganese oxidation state is going to be 8/3, which confirms the thing that this is a mixed oxide, right? Because it doesn't make sense to have a fractional number, right? But this must be a mixed oxide. But that's not important right now. Let's take it as 8/3. ठीक है, हो गया 8/3. अब क्या करें? 8/3 से हम लोग जा रहे हैं to +6. And this is interesting. I know this is a completely a redox section of this question, but this makes it very interesting. Okay, so +8/3 to +6. But look at this carefully. When you're trying to balance the reaction, you don't have to, but when you're trying to, yahan dekho, yahan there are 3 atoms of manganese. Okay, and per atom charge is, or oxidation number is 8/3. So in a sense, अगर मैं कितने moles, so the question is 2 moles of Mn3O4. अगर मैं 1 mole लूं of Mn3O4, then I'm essentially going to have to multiply this whole thing with 3 and also 3 of this, which means 3 of this. Hold on. Let me show that to you. Let me show that to you how that works, right? Okay, so let's multiply this left-hand side with 3 and also the right-hand side with 3, okay? Which means there are actually 8 electrons being transferred over here, yeah? This is the oxidation state of +8. And here it goes into 18, which is crazy. It seems like a very big number. But hey, we've got the maths to back it up. Okay, so oxidation number change for 3 atoms of manganese is 8 to 18 because again you have a mixed oxide. Okay, so मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि 3 Mn एटम के लिए आपको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 2 मोल Mn3O4 मतलब कि 6 मैंगनीज एटम हो गए. मल्टीप्लाई दिस विद 2. ओके, सो टोटल चार्ज वुड बी 20, राइट? 20 इलेक्ट्रॉन्स. बट इज आस्किंग फॉर टोटल चार्ज. 20 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम लग रहा है. 2 मोल्स बोला है ना, नॉट टू मॉलिक्यूल्स, नॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mn3O4. 2 मोल्स बोला है, तो 20 इलेक्ट्रॉन इनटू 96,500 मतलब ठीक है. let's just say 20 फैरेड. चार्ज हम लोग 20 फैरेड बोल सकते हैं. It's a huge charge. अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, कैपेसिटर्स का क्या होता है? कोई मुझे बताएगा चैट में, कैपेसिटर्स किस रेंज में होते हैं? माइक्रोफैरेड या मिलीफैरेड. बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो मिलीफैरेड हो गया. यू डील विद 10 माइक्रोफैरेड, 50 माइक्रोफैरेड. माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁻⁶. किया है ना फिजिक्स में ये सब? 12th में हो, अभी तो शुरू कर दिया होगा ये सब, राइट? बहुत छोटे छोटे लैब में, फिजिक्स लैब में करते हो, बहुत मजा आता है. ठीक है, सो 20 फैरेड ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड for 2 moles of Mn3O4. मतलब बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए. I'm trying to tell you that electrochemistry वाली चीजें बहुत महंगी हैं. They are very very expensive to run this. But hey, if you want to make such fancy metal finish things that you want to play with, like these phones for example, right? These are like आजकल सब चीज metal में बनती है. That's very expensive processes. But the machines are so expensive, but only when you mass produce it, the cost comes down. Anyway, yeah, metallurgy and materials is very fascinating. खैर, let's get back to talking about the second law of Faraday का दूसरा law. This was a recap of the first law. इससे पूरा जो है खत्म हो गया पहला वाला. Yes, first law is done. Mission MBBS, राम जी कैसे हैं आप? Any doubts? Are we good? आगे बढ़ा जाए. So it took us about half an hour to do the first law in detail, but theory just took us 5-10 minutes. फिर बस बहुत डिटेल में हम लोगों ने सवाल किए, 3-4 सवाल. एक जेनरिक सवाल था जिसमें m equal to ZIT किया. फिर मैंने आपको तोड़ मड़ोड़ के बाकी जो भी चीजें आ सकती है सब कुछ हमने साथ में कर ली. आई डोंट थिंक यू नीड एनी अदर थिंग. ऑब्वियसली नीड प्रैक्टिस, बट थियोरी वाइज आपको और किसी थ्योरी की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर डूइंग m equal to ZIT. एक छोटा सा आइडिया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, विल डू द नेक्स्ट क्लास. ओके, इसी आइडिया को हम लोग ले सकते हैं कि ठीक है, नाउ आई हैव डिपॉजिटेड दिस, नाउ लेट्स डिपॉजिट इट ऑन अ प्लेट. तो कितना थिकनेस होगा प्लेट का, उस टाइप का न्यूमेरिकल विल डू फर्स्ट
नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में करेंगे। ओके, फैराडे का सेकंड लॉ देखते हैं। व्हाट इज फैराडे का सेकंड लॉ? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेम चार्ज पास करोगे, कैसे करोगे यार सेम चार्ज पास? अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, हाउ आर यू गोइंग टू पास द सेम चार्ज? अभी लॉ तो है, लॉ पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉ सेज इक्वल चार्जेस पास, देन समथिंग हैपेंस। अरे यहाँ पे देख बोल दिया है, इट सेज दैट द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल, सीरीज पैरेलल, क्या फर्क पड़ता है सीरीज पैरेलल में? अगर सीरीज में दो रेजिस्टर लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? हियर द पोटेंशियल ड्रॉप changes. Okay, V1 plus V2 equal to overall V. Correct? In this case, I1 plus I2 equal to current, whatever this I is. हाँ, करंट स्प्लिट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप स्प्लिट हो जाता है। फिजिक्स यार थोड़ा सा बहुत चलता है, यू हैव टू नो दिस। ओके, विच मीन्स कि कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे करंट कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू पास द सेम चार्ज, जाहिर है सेम करंट भी होगा, सेम चार्ज और सेम करंट, देन यू मस्ट कनेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन सीरीज। इज दैट ओके? बहुत जरूरी बात है, कॉन्सेप्चुअल आइडिया, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके ओके, नाउ दैट वी हैव दिस सेटअप, उसके बाद the mass deposited at each electrode will be in the ratio of their electrochemical equivalent. हाँ, this is what is the big deal over here. What is the big deal over here? We'll write down the expressions. M equal to ZIT, M equal to ZIT, M1, Z1, ठीक है. Now, if I'm saying that charge is same, then M1 by M2 will be equal to Z1 by Z2. This is Faraday's second law. I'm not even kidding. This is literally Faraday's second law. That's it. दो लॉ बट एक ही हुआ ना, मैंने बोला था शुरू में इट्स जस्ट वन लॉ, इट लुक्स लाइक देयर टू लॉ बट इट्स ओनली वन। यस राजन, एब्सोल्युटली, ऑलराइट, मैं हूं ज्ञान। यस कार्तिक, बिल्कुल सही बोला। ऑलराइट, स्वीट, या दिस जस्ट सेइंग दिस, ठीक है, कूल। एंड इफ यू if you just go into detail with the z value, z क्या होता है? It's E1 by 96,500 and E2 by 96,500. So mass, the ratio of masses are going to be the ratio of the equivalent weights itself, right? अंग्रेजी में लिखते हैं, ratio of masses deposited is equal to ratio of equivalent masses. अच्छा, एक और चीज हम लोग इसको कर सकते हैं, एक और वेरिएशन इसका ये हो सकता है कि instead of asking for mass liberated or mass deposited, I can say कितना गैस का वॉल्यूम निकलेगा, that also you can do, right? Instead of putting mass over here, mass से you can go to n, which is moles, n is proportional to v, you take कुछ ना कुछ कर लो, so you get n is equal to 22.4 times, sorry, v is equal to 22.4 times n, है ना? That's Avogadro's law. और कॉम्प्लिकेट करना हो तो बोल देंगे यार टेम्परेचर बदल देते हैं, ठीक है, कर लोगे तुम लोग, प्रेशर बदल दो, P equal to nRT. That's it. That's the variation you will get in this question. Okay. Also, another kind of question you can get is कि चलो मैंने पास किया तो एक कूलम चार्ज, बट उसमें से पूरा चार्ज वहां तक पहुंचा ही नहीं, देयर आर लॉसेस, है ना? देखो प्रैक्टिकली हम लोग अपने थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि परफेक्ट होगा, बट देयर आर लॉसेस एवरीवेयर। अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इवन इट कम्स फ्रॉम अ क्लीनेस्ट सोर्स, जस्ट बाय ट्रांसमिटिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर, लॉसेस होते हैं, ठीक है? तो लॉसेस हैपन एवरीवेयर। सो यू से कि एफिशिएंसी थोड़ी कम है, देयर आल्सो यू हैव टू जस्ट अकाउंट फॉर दैट। सो बी केयरफुल, रीड ऑल ऑफ दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी के पीछे वाले सवाल सारे सॉल्व करिए, एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, ये सबसे जरूरी है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज करिए, जो भी मॉड्यूल आपके पास है वो सब करिए, बट फर्स्ट एनसीईआरटी, फर्स्ट एनसीईआरटी। Okay, that was the heavy part of this session. अब काफी chill part है। अब now it is just listening to some concepts that are going to come at you. Really, अभी parts काफी chill है। अगर मैंने आपको I ended the last session by saying कि NaCl हम लोग करेंगे molten form में, उसको electrolyze करेंगे। Let's revise that very quickly and aqueous form भी देखते हैं। molten form में क्या था? molten form में NaCl एग्जाम्पल लिया था, अभी दूसरा ले लो। टेक NaF, NaF भारी चीज है, या NaF को लेते हैं। इसमें देखो
Now the only difference is I've also given you some E naught values. E naught values. बाप रे, look at that, huge, huge, huge. सोडियम है भाई बहुत अच्छा reducing oxidizing agent. What is sodium? Is it likes being Na plus. मतलब इसमें कुछ तो दाल में कुछ काला है नहीं? Don't you think so? Na plus electron gives you Na. रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो गया इसका, अच्छा, और इसका भी नेगेटिव हो गया. हाँ, कैथोड में रिडक्शन, अच्छा, नाउ आई सी व्हाट इज द प्रॉब्लम. कैथोड में ऑल्सो इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड एनोड ऑल्सो इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना. चाहता क्या है ये भाई साहब? चाहते हैं रिड्यूस होना. दिस वांट्स रिडक्शन, दिस वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज. एंड रिमेंबर व्हाट आर वी डूइंग इन इलेक्ट्रोलिसिस? हम लोग एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं. जो चाहता है उसको नहीं करना है तो उसका एग्जैक्टली उल्टा कर दे. देखो, सोडियम होना चाहता है ऑक्सीडाइज, वी लाइक नो, यू विल गेट रिड्यूस. हेंस वी मस्ट पास वेरी वेरी हाई वोल्टेज का थिंग, मतलब उल्टा डायरेक्शन में बहुत ही हाई वोल्टेज. ये हाई नहीं लगता है, लाइक 2 वोल्ट कितना होता है? हम लोग 200 वोल्ट पे काम करते हैं भाई साहब. हम लोग डीसी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं. आपका फोन गेट्स चार्ज विद 5 वोल्ट्स, राइट? गेट अ फोन चार्जर. है तुम्हारे पास फोन चार्जर भी पास में? मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ड्यूरासेल का फोन चार्जर, ठीक है. में क्या लिखा है? आई कैन नॉट शो यू व्हाट इज रिटन, बट इफ यू हैव अ फोन चार्जर नियर यू, प्लीज चेक की वोल्टेज क्या होता है. करंट अलग अलग होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है. वो हम लोग डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स का थोड़ा आइडिया. 5 volts is a direct current we are talking about. Okay, the 220 volts you're talking about, that is AC, alternating current. So 5 volts and ampere बदलता रहता है. 2-3 amp हो गया तो वो मतलब 15 watt की चार्जिंग, जो 100 watt चार्जिंग तुम लोग देखते हैं ना, वहां पे करंट बढ़ता रहता है. वोल्टेज इज सेम. 5 watts ह्यूज, 5 watt बहुत ज्यादा है, 5 वोल्ट बहुत ज्यादा है. यहाँ पे 2.7 ये हो गया, ये तो 5 से ज्यादा हो गया, ठीक है. आई नीड टू हैव अ वोल्टेज ऑफ ग्रेटर देन 5 पॉइंट, व्हाट इज दिस? समवन 5.7 वो सम बुक ना, 8 and 7 5, ठीक है. 5.5 वोल्ट से ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा. हाउ डू आई गेट दैट? बोथ ऑफ दीस को ऐड करो, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे डालना है 2.7, हियर आल्सो इज 2.87. ओके, कूल. So that was a bit of the math behind it, just to get you a feel of 5 volts is a lot. This is huge. Okay, direct current में बहुत है. Okay, कैथोड में सोडियम, एनोड में F2. अगर ये 5 वोल्ट वाला चीज फंडा दिमाग में बैठा है ना, कार की बैटरी देखो, उसमें 1 वोल्ट की 12 सेल होते हैं, 12 नहीं 6 सेल होते हैं, तो वो दैट इज ओनली 6 वोल्ट्स. एंड दैट लिटरली पूरा तुम्हारा घर का इलेक्ट्रिसिटी उससे चलती है, बिकॉज दैट डायरेक्ट करंट दैट गेट्स कन्वर्टेड टू एसी. हाँ भाई, मुझे फिजिक्स में बहुत मजा आता है. आई नो आई कीप डाइवर्टिंग माय अटेंशन टुवर्ड्स फिजिक्स बिकॉज इसमें फिजिक्स की जरूरत है. अगले सेशन में भी फिजिक्स की जरूरत होगी, ठीक है. पावर बैंक, यस राजन्या, आई लाइक इट. पावर बैंक है 5 वोल्ट. एक्सीलेंट, वेरी नाइस. अब पानी डालो, एंड पानी, that was not for theoretical effect. When you put water, things get weird. Okay. Now aqueous solution इसको बोलते हैं. This is the most common thing. वो normally molten वाला चीज is just there theoretically. It's very hard to get molten stuff without any impurities and all. पानी वाला चीज is something what you do in the lab pretty easily. Now अगर पानी है ना, तो दो और रिएक्शन आ जाती हैं इक्वेशन में that compete with the existing anode and cathode reactions. What do I mean? देखते हैं, ठीक है. और अगर किसी का जो है कंपीटिंग, मतलब कम कौन सा होगा? which one do you think will go down if you have competing products? We'll see. There is some text written over here. Higher the standard reduction potential, greater will be ease to undergo reduction. देखते हैं, ये सब not important. Let's see the numbers. देखो, कैथोड में उल्टा रिएक्शन है ना, ये चाहता है इस डायरेक्शन में, ये चाहता है इसमें, इस डायरेक्शन में देयर आर पॉजिटिव. उल्टे डायरेक्शन में E नॉट इज पॉजिटिव, बट आई एम फोर्सिंग इट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में. अब देखो, इन दोनों में से विच वन डू यू थिंक इज इजीली डन? इफ आई गिव एन ऑपोजिट वोल्टेज ऑफ 0.83 वोल्ट, तो थोड़ा ज्यादा, लेट्स से 0.831 वोल्ट्स और 2.72 वोल्ट्स. क्लियरली दिस इज लार्जर, राइट? विच मीन्स कि कैथोड में भाई सोडियम तो नहीं निकलने वाला है, इंस्टेड हाइड्रोजन आराम से निकलेगा. विच मीन्स अगर इसीलिए अगर आप NaCl पानी में डालो एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालो, तुमको सोडियम मेटल नहीं मिलेगा. अगर वो होता ना, इट वुड गो क्रेजी. इफ यू गॉट सोडियम मेटल देयर, इट वुड ब्लो अप. सोडियम एंड वाटर, दे डोंट रिएक्ट वेरी नाइसली. So nature takes care of you. Even if we try and do stupid things, nature kind of takes care of you. Yeah? So
it is not possible for sodium to get out of the solution. Instead, hydrogen gases bubble hongi. Okay, so the product at the cathode is going to be hydrogen instead. Yeah, exactly, right? यहाँ पे मैंने negative values लिखी हैं because this is the actual reaction happening, right? This is the actual reaction happening at the cathode and anode, at the cathode right now. और इसको करने के लिए इसका opposite, I have to provide a potential difference greater than this in the positive direction. Yeah, this is something we've covered multiple times. मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ. Okay, anode में कुछ text लिखा है, देखा जाएगा. Text is not important. ठीक है. Write the same thing around. Write the reaction and the reaction उस particular reaction का आप लिख दो ये potentials. Now see here also it is obvious. There is no chance, right? Look at this. Here again this is easier. I would rather do oxygen. So if I put NaF, NaCl भूल जाओ, NaF specifically पानी में मैंने डाला and I try and electrolyze it, ना तो सोडियम निकला ना तो फ्लोरीन निकला. No sodium metal, no fluorine gas. Instead I got hydrogen gas and oxygen gas निकल गया. ठीक है? Fascinating, fascinating. And things become even more interesting from here. Now if I take NaCl, same चीज होती है, right? At the cathode, same as NaF, but something really interesting happens at the anode. Cathode में same है तो hydrogen निकल गया. At the anode, things go crazy. Now anode में from क्या बोलते हैं उसको conventional wisdom, हमको लगेगा भाई निकलेगा ऑक्सीजन, but instead this I think get weird. Instead क्लोरीन निकल जाता है. What is the point of teaching all this and when you're saying कि इतने लॉजिक के साथ and then you say नहीं कुछ और निकलता है. See there is logic here as well. The logic is that हम लोग अभी सिर्फ thermodynamics की बात कर रहे हैं. And if you have attended my thermodynamics session, I've always told you the intro to that session is कि देखो लाइफ में कोई चीज दो कारण की वजह से होती है. One is energy, second is practicality मतलब kinetics. तो thermodynamics and kinetics. अभी ये जो ऑक्सीजन इसमें फॉर्म हो रहा है इफ थियोरेटिकल फॉर्म, उसका रेट इतना धीरे है. क्लोरीन है कि भाई तुम करते हो आराम से, हम निकल जाते हैं, तुम अपना करते हो हम निकल जाते हैं. This is a very crude way of doing it. There's something called the over potential that is responsible for this. ठीक है, वहां पे चीजें accumulate होती जाती है, गैसेस निकलती जाती है. So when the two values are really close together, यहाँ पे काफी close है. It may not seem so, but it's like 0.11 volts, right? 0.13 volts का difference है. When the values are close together, then you have to look at what really happens in real life. Yeah, you cannot predict it. Real life में क्या होता है आपको देखना पड़ेगा. Okay, and this थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से निकलना चाहिए ऑक्सीजन, बट काइनेटिक्स की वजह से एक्सपेरिमेंटली बहुत धीरे होता है, इसलिए निकल जाता है क्लोरीन. ठीक है, दिस इज अ बेटर थिंग दैट हैपेंस. नाउ लेट मी आल्सो जस्ट exactly let me also just quickly go to NCERT and say hey, this is not something that I Ashish made up. It's real. It's in your NCERT, which is why I'm teaching it to you. And this is not something that I'm teaching to you randomly because भाई कुछ भी extra पढ़ा देते. That's not my goal. I would never do that to you, right? Okay, cool. And there are some other interesting things that are written over here. Right? यहाँ पे एक छोटी सी लाइन यहाँ पे दी हुई है. क्या दिया हुआ है? The reaction at anode with lower value of E naught is preferred and therefore water should get oxidized. However, on account of over potential of oxygen reaction, this is preferred. The net reaction will summarizes this. Over potential क्या बला होती है? I'll give you more stuff to read if you want, but basically it has to do with kinetics and also accumulation of stuff at the interface. Remember मैंने बताया था phase boundary होती है. ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है और वहां पे उस सरफेस पे ही रिएक्शन हो रहे हैं, तो कुछ चीजें उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती है, स्टिक अराउंड, दे डोंट गो अवे दैट इजीली, इवन इफ दे गेट फॉर्म दे डोंट गो आउट. सो आई विल गिव यू स्टफ रीड इफ यू वांट, बट दिस इज द जनरल आइडिया. आल्सो एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग एक दो चीजें दी गई है. ठीक है, एंड दिस हैज कम इन जेईई मेन. लोगों को बहुत मुश्किल सवाल, अरे भाई बहुत बहुत जो है क्रेजी सवाल दे दिया. कुछ नहीं यार, एवरीथिंग कम फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, रीड दिस, यहां तक पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ोगे रीड दिस लाइन. For dilute sulfuric acid reaction, this is preferred, but at higher concentration H2SO4 reaction 3.39 is preferred. मतलब कि regularly कहाँ गया reaction 3.38. This is what happens for H2SO4 also. Dilute. ठीक है, आपको बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है ना, वो अपने आप होता नहीं, उसको थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस देना पड़ता है प्रैक्टिकली करने के लिए. देखो, वी आर टीचिंग थर्मोडायनेमिक्स वाले आइडियाज, बट देयर आल्सो किनेटिक्स आइडियाज. किनेटिक्स आइडियाज से थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालना पड़ता है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू हैपन. ओके, कूल. बट अगर वो मैंने जो है वहां पे बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया, देन अ कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हिच इज स्कैरी एंड क्रेजी. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो इसलिए बोलता हूं दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए. विदाउट दैट लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट.
because the exams you're writing are from NCERT, so please read the NCERT. I know. I think we should count the number of times I tell you guys to read NCERT in a day. हाँ, ठीक है, चलो बढ़िया. Now, besides this, is there any doubt that you have in any of this? Please मुझे बताइए. Let's do one quick question and shall we call it a day? एक last question आज के लिए and we'll call it a day. If you have any doubts, you can feel free to ask me. Salts of atomic masses A and B and C are electrolyzed using the same amount of charge. कैसे? हम लोग रखेंगे series में. So I've got cell 1, cell 2 and cell 3. ठीक है? Same current, same charge. It was found that 4.5 gram of A was deposited, mass of B and C were some other masses. What are the valencies of A, B and C? वाह बेटा, how do we do this? इसको हम लोग यूज कर सकते हैं Faraday's second law. How? W1 by W2 is equal to E1 by E2. Can you try this question out? महक, क्यों मतलब क्वेश्चन, are you waiting for the question? This is the question I wanted to solve. एक सवाल कर लेते हैं, we'll call it a day. इसको ट्राई करिए प्लीज, मजेदार सवाल है. Yeah, you just have to use this. Oh, are you giving me the answer? Q runs giving the answer. So if I have to speed run this, what do I do? Mass, मतलब 4.5 gram, 2.7 gram, that is the deposited mass. Okay. And 9.6 gram. ठीक है. Atomic mass 15 and 27. Charge same is equal to 15 by X divided by 27 by Y. And I can also put 2.7, 27 by Y, 27, 27 by Y, and 2.7 by 9.6 is equal to 27 by Y, and also divisible by 48 by Z. So इससे मुझे X by Y का रेशियो मिल गया. 1, this goes once, this goes once, this goes 10 times. 4.5 and 15. Oh God, that's not good, is it? 4.5 and 15. 15 3 is 45, right? 15 3 is 45. So 0.3. ये हो गया 10. ठीक है. So x by y is equal to 3. I got one relationship. और इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा क्या होगा? 1 10. This is 1 and 0.2. So y by z equal to 1 by 2. x by y equal to 3 सही था? हाँ सही था. हो गया खत्म, आंसर हो गया. हो गया. ओ सॉरी दोस्तों, I should check my chat. I should check my chat. Thank you दोस्तों. Here you go. Now you should see the question. इसलिए थोड़ा बातचीत कर लिया करो. ठीक है, फिर से सवाल दिखाता हूं. Salts of A, atomic mass 15, B atomic mass 27, and C atomic mass 48 were electrolyzed using the same amount of charge, same quantity of charge. मतलब है सीरीज में सेल्स. ठीक है. It was found that this much is deposited. वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा था. Same amount मतलब कि सीरीज में. I can use Faraday's second law and I got some expressions. Can you figure out the answer from here? इसको मिटा देता हूं, तुम लोग कर देना. मैंने बोला था अगर सुन रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुन रहे तो डोंट वरी, कर लो सॉल्व, साथ में कर लो. सॉरी अबाउट दैट महक, राजन एंड एवरीबॉडी एल्स. जिया, व्हाट्स अप? कैन यू डू दिस? नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये सवाल इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन जहां पूरा करने का जरूरत नहीं है, राइट? यू डोंट हैव टू गो क्रेजी सॉल्विंग दिस. ओके 1 1 3 and 2, और इज इट 3 1 and 2? लेट्स सी. फिर से हम लोग पूरा इक्वेशन लिखते हैं. Faraday's second law, what does it say? WA by WB, ZA by ZB. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन. ठीक है, एक्स वाई जेड ले लो, जो भी ले लो, कुछ भी ले लो. दिस आई टोल्ड यू गोज हाउ मेनी टाइम्स? दिस गोज 10 टाइम्स एंड दिस 15 3s are right, so 0.3 टाइम्स. सो ओ देखो, ए डिनोमिनेटर में था तो मैंने पहले कुछ रैंडम ले थे. ए बाई बी इज नाउ गोइंग टू बी इक्वल टू 1 by 3. Okay, then Rajanya was absolutely right, I think. Okay, and in this case, this is 3, this is 2. So C by A is equal to 2 by 3. I want to say A by B is equal to 1 by 3. Okay, cool. This is a little weird. दूसरा वाला मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ना?
B by A is 3, same as यहाँ, okay, यहाँ सही लिखा है. C by A is, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया. C by A is going to be 3 by 2. Okay, cool. So using this, you can get couple of expressions. थोड़ा सा solve करो, you get A, B and 3 by 2. Huh. Oh, that's interesting. If I get 3 by 2, it shouldn't be 6. Oh, Rajanya, I think you went halfway in like Abhimanyu, and then पूरा हम लोगों ने नहीं किया, right? Because the ratio of C by A is 3 by 2, right? Check this out. Ratio of A's to B is 1:3, right? जो इधर भी है, but you also have to account for ratio between B and C. हाँ, हाँ. Let's see if this makes sense. 2, 6 and 3. Let's backtrack ना, backtrack करते हैं. If we do 27 by 6, okay, 27 by 6, उसका क्या हो जाएगा? That will become 9 by 2. 9 by 2, which is 4.5. Okay. And 15 by 2 becomes 7.5. Okay. This is not helping, is it? 9.6 by 3 becomes some other weird number. Yeah, this is becoming amazingly complicated. Probably not the best way to be doing this. तो जो मैंने पहले उसमें किया था, did this make sense to you, Rajanya? Is this okay? Do you want me to go over this by any chance? Jia, Mehak, समझ में आ रहा है? Is this okay? I understand that I'm doing this session on the NEET channel, and this is not something that's ever going to be tested in NEET. This is way beyond NEET. But I told you, मैं जो theory कर रहा हूँ is theory for JEE Main, for NEET, for NEST, even for JEE Advanced to an extent, right? We're not doing JEE Advanced level question, but the theory will help you solve those questions as well. लॉप हॉप्स के व्यंजन थोड़ा करना पड़ेगा. The idea is here, I think this is a PYQ from JEE Advanced itself. Okay, I think. I'm not so sure, but मुझे यही हल्का सा याद आ रहा है. Let me just check. Is it from JEE Advanced? What question is number is this? This is all right, no? So the answer is not 1, 3 and 2, but there was a 6 factor there. Is this okay? We good? Yeah, it's 2, 6 and 3. Is that all right? All right, cool. ठीक है. All right, thank you so much everybody for joining in. Here's another question. Let's do this as the homework question and let me know what you guys think, okay? In the electrolytes of aqueous NaCl, 4 moles of H2O evolved with 0.5 moles of O2. Find the mass of Cl2 liberated. This is, I told you, the other type of question. Now, instead of asking for mass, they will ask you कि कितना mole निकल रहा है और volume निकल रहा है. So it's just, it is very doable. All right, thank you everybody for your time. If you're free, I'm going to be continuing periodic table. That's fun. We'll open ptable.com. लोग chill करेंगे at 8:30 today. All right, see you everybody. Bye. Thank you for joining in. Tata.